Microsoft Excel, VLOOKUP, pivot tables, and advanced Microsoft Excel techniques, and mail merge. Good evening, everyone. We welcome all of you to the third session of Microsoft Excel, VLOOKUP, pivot tables, and advanced Microsoft Excel techniques. So we have covered a lot of things in last two sessions, and there were certain topics which were demanded by the participants, and we also wanted to cover something more in VLOOKUP and mail merge. So today we are having our third session. And just to give you brief outlook, what we'll be covering today is mail merge and sending emails using mail merge and using Microsoft Word and Outlook. So both are Microsoft applications. So we'll be exploring how to send emails using mail merge. Secondly, we'll be covering about a quick recap of VLOOKUP because we have received a couple of emails from you that you have certain doubts. So we'll be having a quick recap of VLOOKUP and we'll be taking your queries on VLOOKUP most importantly. So any queries you have, we have received queries from Aarti Mehta, from some Sana. So we'll be addressing your queries. Then we'll be shifting to HLOOKUP. And yes, very important, while recapping VLOOKUP, we'll be telling you some additional things about VLOOKUP which you need to keep in mind while using this powerful function of Excel. So there are some common errors which are actually done while applying VLOOKUP. So how to avoid those errors, we'll be discussing about that. So to start with, as we are always doing since last three sessions, we'll be starting with mail merge and then we'll proceed to these topics. So over to Yogesh Bhaiya. Yeah, good evening everybody. We have learned mail merge with normal document and database in Excel, and we got some queries regarding using mail merge with like sending bulk emails through mail merge. There are few limitations which I'll tell first. The main is we cannot send any attachment through email while we are using mail merge for sending bulk mails. Second, it is advisable to share or to store the email IDs in Excel rather than Outlook or Outlook Express if we are using it with the help of screen reader, and that is mandatory for us because due to our vision problem we are using a screen reader. So it's advisable or it's recommended to use Microsoft Excel as a database for your emails also. Okay, so we will see how to send bulk emails through mail merge. And the third important thing is that any email client like Windows Mail or Outlook should be configured on your system before starting the mail merge process. Okay, so first step in sending bulk emails through mail merge is that we should type our letter or the body of our mail in a document, and we should have the email IDs in an Excel file. Now I'll share my screen and tell you the steps. Then we will take the queries. Steps for sending email, Zoom cloud meetings, document for mail merge docs dash Microsoft Word. So my JAWS is Document for mail audible to merge docs everyone? dash. Yes, sir. Okay, so this is the Word Top of file, document dear sir. in which I have created the body of my Alert, host has muted all participants. Yeah, participants, you are requested to Alert, mute Amit Kahuja has yourself left the from waiting your... room for this meeting. Okay, I muted all participants. All participants. Hello, am I audible? Yes. Okay, this is the Word document in which I have written the text which I have to use in my We are pleased to invite body you of to a my session of email. blank. So now I'll go to the mailings tab. Document for mail merge. Virtual ribbons, insert tab, references tab, mailings tab to move through the controls on this In ribbon. Use tab for mailings, shift, lower ribbon, create submenu, start mail merge submenu to move through the controls on this I'll ribbon. go Use to tab, Start Mail Merge submenu. start mail merge button drop down has pop up. Press alert, Amit Kahuja has Then Start Mail Merge drop down. space. Leaving menus, menu, lower ribbon, menu group box, email messages, alt followed by M. There is one option of email Alert, messages. Amit Kahuja has joined the meeting. Press enter on this. Leaving menus. Web layout alert. Jay and Sid Raghav has left the waiting room for this meeting. Start mail merge button drop down has pop up. Alert. Again, Jay and my Sid Raghav cursor has has joined. come to Start Mail Merge drop down. Select recipients button drop down has pop up. Press space to From activate. there, I'll press down arrow to come to this option. Select recipients button drop down has pop up. Select recipients. I'll press space bar. Lower ribbon. Start mail merge group box. Menu group box. Type new list alt followed by MRN. Use existing list alt followed. There are few options. I'll press up and down arrow to display. Select from Outlook contacts alt Select followed by from- MRO.
Outlook contacts. Type new list alt followed by MRN. Type new list. Use existing list alt followed by MRE. Or use an existing list. I'll press enter on this. Leaving menus. View edit. Select data source dialog. File name edit combo to set the value. Use the arrow keys or type the value Alt+N. Now I have to select the database or the Excel file where I have the list of my email IDs. So I'll select that. Items view list box. New source button. Control host. Tree view. Os left parent C right parent closed. 8 of 9 to move through N level 2. New volume left. Shell folder view. Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder. D. Dropbox. Shell folder view. Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder view. Items view. D. Alert. Vasu has left the waiting room for this meeting. Dropbox. Shell folder view. E. Excel session. Shell folder alert. Vasu has left the waiting room. D. Data for mail merge.xlsx. Sheet $1 4/21/2021 24:27 p.m. 4/21/2021 24:27 p.m. Table 1 of 3. Now it is displaying the sheets. Sheet 1, sheet 2, sheet 3. I can select. So my data is in sheet 1. So that is already selected. Select table dialog. First row of data contains column headers. Checkbox checked. First row of table contains column headers. This is the checkbox and it is checked because in our first row we have the column headers like name, address and email ID. OK button. To activate, press space bar. I'll press alert. enter Shiv on OK Mohan Thakur button. has left the meeting. Web layout view. Edit alert. Shiv Mohan Thakur. Thanking you. Now our cursor alert. has Vasu come has entered the waiting room for this. to the document. I'll press F6 again to go to the pane. F6. Navigation pane. Edit type in text. F6. Document pane. Status bar toolbar. F6. Lower ribbon. Select recipients button. Drop down has pop up. Press space to activate. Okay, so my cursor has I have pressed F6 3-4 times and my cursor has landed now to select recipients again. I'll press down arrow from here. Edit recipient list button to move through the controls on this ribbon. Edit recipient list. I'll have nothing to do with this. Start mail merge button drop alert. Vasu select recipient. Edit recipient. Start mail merge button drop down has pop up. Press space to alert. Vasu has joined the meeting. I'll press left arrow to go back a step like backward. Start mail merge submenu. Right and insert field preview results. Finish submenu to move through the controls. There I have an option finish results submenu. I'll go to this. Finish and merge button drop down has pop up. Press space to activate. Finish and merge button drop down has pop up. Press space to activate. Menus up or down arrow. Drop down. Space. Leaving menus. Menu lower ribbon. Finish group box. Menu group box. Edit individual documents to move through the control. Print documents send email messages alt followed by MFS. There is one option send email ... I'll press enter on this. Leaving menus. Envelopes button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Merge the email dialog. Message options. The combo box. Now my cursor has landed into two edit field where I'll press left or right arrow to see what options I'm getting. Title is document for mail merge Microsoft Word. Para and dollar, not left arrow, right arrow. Up arrow and down arrow you need to press. House underline note. Street underline name 3. City 4. State 5. Pin 6 of. E underline mail 7 of 7. So yeah, by pressing down arrow I have come to the field email address. I'll press enter on this. Then I'll press tab. E underline mail 7 of 7. Merge the email dialog. Message options. Subject line edit. Type in text. Alt S. Here I have to write the subject line. I'll write a word invitation. Invitation. I'll press tab. Mail format combo box. HTML to change the selection. Mail Use the arrow keys. format, Alt M. we have to leave it as it is. All radio button checked to change the selection. Then again all and selected, so I'll just send to all. From edit. Type in text. From edit, it will take my default email ID which is configured in Outlook.
To colon edit, type in text, Alt T. To colon edit, I don't have to enter here. OK button to activate, press I spacebar. just press OK and it will send. So I'm not sending at the moment. I'll just press escape. Escape, web layout view, edit escape. Meeting control, audio settings, but start my video, secure, open, pause button, new share, pause share button to activate, annotate button, remote control, more button drop, annotate button, pause share button. First condition that email client should be configured on your system. Okay, no, if I have the Outlook but I want to send that mail through Gmail, will it be sent by Gmail or Outlook? No, Outlook is basically using one of your email now, whether it is Gmail or Yahoo. Yeah. So if you have configured your Gmail ID on Outlook, so from your Gmail ID will be sent. Okay. But if I don't have the Outlook configured, so it will not. You cannot send. Yes. Okay, sir. Thank you. Yeah, next query please. हाय सर, कृष्णा है Yes. सर। जैसे आपने अभी मेल सेंड करना बताया आउटलुक पे लेटर लिख के, तो जो आपने पिछली बार हमें लेटर लिखना सिखाया था नॉर्मल, क्या हम वो लेटर भी लिख के इसी तरह से मेल कर सकते हैं? अगर आपको लेटर ईमेल करना है तो आप कर ही सकते हैं। मतलब जो भी आपको लेटर लिखना है वो आपको बॉडी में लिखना पड़ेगा ना। हाँ, डॉक्यूमेंट में, वर्ड फाइल में। हाँ, तो वर्ड फाइल की बॉडी में जो आप लिखेंगे वो आपका टेक्स्ट बॉडी में आएगा। तो सर लेकिन उसमें तो जैसे 8 पेज आ गए थे, जैसे हमने 7 लोगों का डेटा क्रिएट किया था तो 8 पेज आ गए थे। ओके, आई विल टेक दिस फॉर कृष्णा। मेल मर्ज, जो मेल सेंड करने का जो प्रोसेस है, दैट इज द लास्ट स्टेप। ओके, मेल मर्ज करने के बाद जब आप पूरा डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हो, आप फिनिश एंड मर्ज करते हो, तो फिनिश एंड मर्ज में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, विच वन ऑफ द ऑप्शंस जो आपने यूज किया था वो क्या था, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, जिससे आपके वो 8 पेज आ गए थे। तो उसके अलावा वहां पे 3-4 ऑप्शंस और अवेलेबल हैं, जिसमें से सेंड ईमेल एक ऑप्शन है, प्रिंट एक ऑप्शन है, प्रिंट एनवेलप्स एक ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आपके पिछले स्टेप सेम रहेंगे, बट लास्ट स्टेप में आपको चूज करना है कि आपको मेल भेजने हैं, कि आपको 8 डॉक्यूमेंट अपने पास सेव करके रखने हैं, या 8 डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं डायरेक्टली विदाउट सेविंग। तो दिस इज द लास्ट स्टेप। ओके, सो कैन आई यूज 2 options as well? First I can create an individual document. One by one. First create individual document, then save that, then you can send emails also. Okay, thank you. Yeah, next query please. Hello sir. Yes. Yeah, I am Zohair from Mumbai. Okay. जैसे अभी सर ने बताया कि हम लोग दोनों भी प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब अभी बैंक का कोई लेटर है, उसके अंदर मैंने हर एक कस्टमर का अकाउंट नंबर और उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स अलग अलग होंगे, तो वो तो मैंने अपना मेल मर्ज से उसको मैंने ले लिया। अभी मुझे सभी मतलब अभी मेरे 100 क्लाइंट्स है, 100 क्लाइंट्स का मैंने मर्ज कर दिया, टेलीफोन नंबर और उसका अकाउंट नंबर। अभी मुझे उन सब कस्टमर्स को इंडिविजुअली मेल करना है, तो ये मेल मर्ज से वो कैसे डिसाइड होगा कि विच मतलब कौन से मेल को कौन सा वाला लेटर जाएगा? Yes, Rahul. Yes. Can you come again? Yes sir, my question is, if we create a bank letter, for that every person is different with their contact number and their telephone number and everything. So I use the mail merge function by using Alt Shift F, and then do I have to press Alt Shift N to complete that process, or directly go to the mailing process without pressing Alt Shift N? Again, जो Alt Shift N है, उससे क्या हो रहा था? What is the final outcome which was happening with Alt Shift N? Yeah, that is the finishing of the process and creating 800 letters from the one all the fields, merging all the fields. Alt Shift N is one of the shortcuts. अगर आप चाहो तो मेन्यू में जाके भी एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट कर सकते हो, उससे भी वही होगा, और Alt Shift N प्रेस करोगे तो उससे भी वही रिजल्ट आएगा। तो सर मुझे यही पूछना है कि पहले Alt Shift N करके बाद में मुझे ईमेल का ऑप्शन चूज करना है? नहीं। वो तो Alt Shift, हाँ राहुल you go ahead. So आपने मेलिंग फील्ड्स इंसर्ट कर ली, Alt Shift N है कि आपको अपने कंप्यूटर पे उसे सेव करना है, 28 डॉक्यूमेंट्स या 100 डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं। Exactly, लेकिन आपको सेव नहीं करना, आपको ईमेल करना है। Right. So for that you have to go to mailings, finish and mail. Okay. Alt Shift N करने की जरूरत नहीं है। See, try to understand the difference between two concepts. जो मैं कृष्णा को समझा रहा था, सेम चीज आपको बोलूंगा। Alt Shift N and sending email are the choices available after completing the merge process, after inserting the merge fields. Okay. So Alt Shift N is the shortcut. You need not to go to F6 and press up arrow, down arrow. You can directly press Alt Shift N. But this option is available in the same tab where send email option is available. Okay. तो ये ऑप्शन edit individual document के नाम से अवेलेबल है। Okay sir. Okay. Thank you. नहीं राहुल यहाँ मेरा भी मतलब मैं इनका क्वेरी जो है मतलब वो थोड़ी सी डाउटफुल है, मतलब मेरे लिए भी, कि
जब मर्ज कर दी फील्ड्स ऑल्ट शिफ्ट एफ से, हाँ उसमें तो फील्ड्स वो ब्लॉक्स में और वो उसमें आती है मतलब ब्रैकेट्स वगैरह में। हाँ तो हाँ जब ईमेल करेंगे तो वो सेम बॉडी जाएगी ना, वो तो सारे ईमेल्स पे। हाँ, तो बॉडी सेम योगेश भैया जाएगी। तो वो दे कैन नॉट यूज द नेम्स एंड वो सब ना, मतलब नहीं डियर योगेश आई एम राहुल और टेलिंग वो यू, सब। यस यस आई एम टेलिंग यू। सो बॉडी विल रिमेन द सेम, बट जो मेल मर्ज फील्ड्स आपने इंसर्ट की हैं, 10 मेल मर्ज फील्ड्स अगर आपने इंसर्ट की है, वो चेंज हो जाएगी। दैट विल अच्छा चेंज, ओके, दैट विल चेंज। नहीं तो मतलब हमें ऑल्ट शिफ्ट एफ से पहले मर्ज करना पड़ेगा सारी फील्ड्स को हाँ ना। हाँ हाँ, यस 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 अच्छा ठीक है, मतलब मर्ज करके ऑल्ट शिफ्ट एन नहीं करना, यू हैव टू सेंड हाँ ईमेल। ये वाला सेंड यस। वाला ऑप्शन चूज, मतलब ऑल्ट शिफ्ट एफ से हमें पहले अकाउंट नंबर, सपोज मैं 10 लेटर बना रहा हूँ तो मुझे 10 मतलब अकाउंट नंबर वाली फील्ड मर्ज करनी पड़ेगी, और अगर उसका कस्टमर आईडी है तो वो मर्ज करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे सेंड ईमेल चूज करना पड़ेगा, राइट हाँ राहुल? हाँ एब्सोल्युटली राइट। ओके, लास्ट क्वेरी फॉर मेल मर्ज देन वी विल गो अहेड। सर जैसे कि हमने अगर मर्ज कर दिए तो मर्ज करने के बाद तो वहाँ अकाउंट लिखा आता है जैसे कस्टमर आईडी, उसके बाद मेल पे करेंगे तो टू आईडी में डाल दिया, तो ईमेल आईडी डाल दिया तो वो उसका अकाउंट नंबर और वो सब लिखा हुआ आएगा, मैसेज बॉडी में चला बिल्कुल जाएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। बट उसमें आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट ईमेल आईडी है मतलब लेटर पे आपका टू नाम वगैरह उसी का ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा ओके। ओके राहुल, सर एक मेरा क्लास इसी के रिगार्डिंग क्वेरी है, थोड़ा सा डाउट कंप्लीट क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे अभी तक। यस थोड़ा सा डाउट इसी मेल मर्ज रिलेटेड है। जैसे हम एक कंसेप्ट में, जैसे सर ने बोला अभी, एक कंसेप्ट में रहता है कि मेल को मर्ज है, एक ही लेटर है जिसको मैंने या फिर 20 लोगों के हिसाब से उसको मर्ज कर दिया, 20 फील्ड आ गया। अभी मेरे पास 20 प्रॉपर लेटर हो चुके हैं और मुझे वो 20 लेटर्स को अभी मतलब एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में मेरे 20 पेजेस हो चुके हैं, एक पेज के 20 पेजेस हो चुके हैं सभी उसके फील्ड के साथ। तो मुझे ये 20 के 20 जो भी लेटर या फिर जो चीज है, उन 20 लोग को ईमेल पे मुझे सेंड करना है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो जिसका मेल है उसी मेल पे सेंड हुआ जाए। इसका आंसर यही है कि जो ऑल्ट शिफ्ट एन करके आपने 20 पेजेस बना लिए ना, जो वो नहीं बनाने हैं। जी ऑल्ट शिफ्ट एफ करके 1 by 1 आपने फील्ड्स मर्ज कर ली, देन यू हैव टू गो टू सेंड ईमेल। ये मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। नहीं, सेंड ईमेल तक तो आप जाएंगे और ईमेल आईडी इसका कॉलम वहां सेलेक्ट करेंगे ना, जो प्रोसेस अभी हमने मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया। जी फिर वो आगे खुद मतलब लेटर्स इंडिविजुअल बना के भेज देगा उन्हें, बट वो बॉडी में जाएगा, अटैचमेंट नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। नहीं योगेश भैया, हम्म, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमने ऑल्ट शिफ्ट एफ करके मान लो हमारे 10 लेटर बन, मतलब ऑल्ट शिफ्ट एन ना किया, हमने फील्ड मर्ज कर दी, जैसे अकाउंट नंबर सबका अलग अलग होगा ना, हाँ हाँ हाँ, तो हमने वो मर्ज कर दी फील्ड अकाउंट नंबर वाली, ठीक है। तो अब जब मैं ईमेल सेंड करूंगा, मतलब वो ये कैसे करेगा कि मतलब उमंग वाला जो अकाउंट नंबर वाला लेटर बना है वही उमंग को जाए? वो तो वो करेगा, क्योंकि अब फर्स्ट कॉलम में मतलब फर्स्ट रो में मतलब सेकंड रो में आपका नाम है और आपके सामने आपका ईमेल आईडी वगैरह है, तो उसे पता है कि फर्स्ट मतलब जो डेटा है वो उमंग का ही वो पिक करेगा, मतलब जब आप सेंड मेल करोगे तो। अगर लेटर में ईमेल आईडी है ही नहीं, फिर हमें नहीं, लेटर में ईमेल आईडी नहीं है, 2 में तो आपने ईमेल आईडी डाला ना। ये जो फील्ड है ना ईमेल आईडी की, हाँ हेलो, ये फील्ड, दिस फील्ड इज इनविजिबल फील्ड, इट इज नोवेयर टू बी एडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट एरिया। वो तो मैं समझ गया। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फिर अपने आप पिक करेगा, मतलब कि जिसमें उमंग का अकाउंट नंबर होगा वो वहां पे अपने आप पिक करेगा। तुम्हारे पास एक एक्सेल की शीट है जिसमें नाम और एड्रेस है, दो चीजें हैं, और तुमने डॉक्यूमेंट एरिया में इंसर्ट कर दिया नाम एड्रेस, तो वो ऑटोमेटिकली जिसका जो नाम है उसी का एड्रेस ले रहा है लेटर में। एम आई राइट? राइट। ओके, तो उसी में तुम्हारे पास तीसरी फील्ड भी है, ईमेल आईडी, नेम एंड एड्रेस, सो ऑटोमेटिकली इट विल टेक दैट ईमेल आईडी। ओके, थैंक यू। So the concept is very much similar to the mail merge. Rahul sir, can I add something to this? Yeah, why not? Yes. Yeah, it is something similar to the VLOOKUP function that horizontally, vertically it picks the name and the email address from the same row. हाँ, concept वही है। ये कॉन्सेप्ट वही है। राहुल, एक छोटा सा क्वेरी है मेरा, अपर्णा। Yes. लेटर्स या अकाउंट नंबर्स एंड ऑल इज फाइन, पर अगर इसको हम कोई रिपोर्ट के साथ लिख के आते हैं, जैसे बजट फिगर्स है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेल परफॉर्मेंस लेटर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, बजट के हिसाब से होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है दैट यू नीड टू कीप इन, सो आर देयर एनी चेक पॉइंट्स दैट यू डू नीड टू कीप इन, कि से जो एक्सेल फाइल है, इज देयर अ चेकलिस्ट? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो मर्ज नहीं होती है, एंड देन आई डू I got your my question. workarounds. Yeah. Okay, very good. So very important thing you have asked. So the question is regarding dealing with numbers, right? And dealing with errors. Right. हाँ, तो इसमें basically you have to ensure that Excel फाइल में कॉलम हेडर कभी चेंज ना हो, Okay. एंड मोर ओवर जब आप नंबर्स के साथ मर्जिंग करते हैं, डेसिमल प्लेसेस के बाद बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, Right. राइट?
उसको जो टैकल करने का तरीका है, फॉर यू आई एम टेलिंग यू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्सेल डेटाबेस फॉर मर्ज, यू यूज वर्ड फाइल फॉर मेल मर्ज। मतलब जो आपका सोर्स फाइल है, डेटाबेस फाइल है, आप एक्सेल से पूरा डेटा कंट्रोल ए प्रेस करके वर्ड में लेके चले जाइए, वर्ड फाइल में, एंड देन यू ब्राउज, इंस्टेड ऑफ एक्सेल फाइल यू ब्राउज दैट वर्ड फाइल जहाँ पे आपके नंबर प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है, मतलब वो टेबल फॉर्म में हो। हाँ, टेबल फॉर्म में हो, यस, ये इम्पोर्टेंट है। कॉपी दैट टेबल फ्रॉम एक्सेल टू वर्ड एंड देन यू मेल मर्ज दैट, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो भी एरर्स है, मेजॉरिटी ऑफ एरर्स इससे नलिफाई हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। Yes, now we will move forward towards VLOOKUP and HLOOKUP. So, any queries for VLOOKUP? Do we have Aarti with us today? Aarti? Yes. Yes, Aarti. What query you had? Can you just explain us? VLOOKUP में when you जो आपने F4 से ऑटोमेटिकली जो डॉलर वाला बताया था, वो कहाँ पर यूज होगा? मेन तो ये था मेरा। ठीक है, ओके, आई गॉट एंड एक क्वेरी शायद आपकी ये भी थी ना कि आप जब मतलब 2 शीट्स में VLOOKUP यूज कर रहे हैं तो वहाँ भी कुछ इशू आया था आपका मेल में, मतलब ऐसा कुछ था। हाँ जी। तो राहुल, Yes. ये 2 डिफरेंट शीट्स वाला डेमोन्स्ट्रेट कर दो, उसमें F4 भी आ जाएगा। ओके ओके। सिमिलर वे आई थिंक डिफरेंट वर्कबुक्स में भी था, बट वो ट्राई नहीं कर पाई थी मैं। नहीं, वर्कबुक हमने बताया ही नहीं, तभी वो बहुत मतलब टिपिकल होता जाएगा VLOOKUP जितना हम डीप में जाएंगे, तो इसलिए वो हमने छोड़ दिया था लास्ट टाइम। ओके, एनी अदर क्वेरीज अदर देन दिस VLOOKUP को लेके? और मेन तो जो अभी आपने मेल मर्ज का बताया, तो ये तो था क्योंकि ये मेरे अभी यूज होने वाला है, तो इसीलिए मुझे इसकी ज्यादा कर सकते हो। आपके लिए एक सजेशन मतलब हमारे पास था कि अगर आपके कॉन्टेक्ट्स आउटलुक में हैं तो आप उसकी .csv बना के मतलब उसे एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो पहले। एक्चुअली आउटलुक में क्या किया था मैंने, आउटलुक के साथ भी ट्राई किया था ये करने का, बट जब हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाउन एरो कर रहे थे तो वो काफी जगह बोल नहीं रहा था, वो बोलता 4 of 9, 6 of 9, तो नाम नहीं पता चल रहा था कि क्या हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि सर पहले माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज किया था, वो फिर बाद में चल नहीं रहा था, उसके बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट्स ना तो मेल रिफ्रेश हो रही है, कुछ नहीं। देन आउटलुक एक्सप्रेस डाला, वो चल तो रहा है, बट उसमें ये है कि कॉन्टैक्ट्स पहले डालने पड़ते हैं, तो इससे बेटर कि कॉन्टैक्ट एक्सेल में अगर होंगे तो वो बेटर रहेगा। हाँ जी, मतलब हम ये रेकमेंड करते हैं फॉर स्क्रीन रीडर यूजर। ठीक है सर। सर मेरा आउटलुक है ही नहीं, सॉरी, हाँ, अगर आउटलुक है ही नहीं, लाइक ऑफिस में आउटलुक नहीं है, तो कोई और वे आउट नहीं है ना फिर? कोई ना कोई क्लाइंट तो चलेगा। लोटस के साथ ट्राई किया था, नॉट इन द रीसेंट पास्ट, बट आई थिंक से 7-8 months बैक किया था लोटस के साथ, बट I did not get any success. तो लोटस का अपना मेल मर्ज का फीचर है, लोटस you can get connected with us off record. Yeah, I'll get connected with you. Yes, I'll connect with you offline. ठीक है, thanks. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है VLOOKUP से रिगार्डिंग। हाँ, यस। कि VLOOKUP का सही रिजल्ट लाने के लिए द डेटा हैज टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन वी ऑलवेज सी। एडवाइजेबल कंडीशन, नॉट दी, मतलब इट इज not mandatory, but it is advisable. Why it is advisable? When you are dealing with large number of records, like we deal with 4 lakh, 5 lakh, 10 lakh records, तो हम लोगों का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। जो भी VLOOKUP 5 मिनट में होने वाला होता है 15 मिनट ले लेता है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। अभी मेरा डेटाबेस है, उसके अंदर मैं वहाँ बहुत सारी फील्ड है, तो मैंने पहली फील्ड को मतलब जो समझ लो एक नेम ऑफ द फर्म का एक कॉलम है, उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में असेंड कर दिया, और उसके बाद वाले कॉलम जरूरी नहीं है कि वो उसी फॉर्मेट में असेंडिंग हो, because there will be some numerical figure which will be go on descending or haywire order because of the name is being ascended in a particular order. So अगर मैं I got it. Yeah. बट ऊपर के, यस जस्ट लिसन टू मी सर, तो मैंने रिजल्ट फील्ड के अंदर 2 VLOOKUP के फंक्शन अलग अलग यूज किए, तो दोनों के मतलब रिजल्ट कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे हम अपने आपस में? वो एक्सेल का फंक्शन है, वो लेट एक्सेल टेक केयर ऑफ दैट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। एज आई सेड, व्हाट यू आर सेइंग इट्स नॉट मैंडेटरी, इट इज एडवाइजेबल, सो डोंट वरी, आपका रिजल्ट एक्सेल दे देगा, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर आप मतलब 1000 मेल मर्ज VLOOKUP तक कर रहे हो तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्टेड है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली हो जाता है। इट इज एडवाइजेबल व्हेन यू आर डीलिंग विद लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ओके, आई होप आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेरी। यस सर, यस सर। So to answer it in a very crisp format is, you need not to have sorting filtering applied, descending ascending order में sort करना जरूरी नहीं है। Okay, and just to take you to the next level, there are 2, हम VLOOKUP में लास्ट में 0 यूज कर रहे हैं। 0 क्यों यूज कर रहे हैं? हम एक्सेल को कह रहे हैं हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर हम 1 कर दें वहां पे तो एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, नियरेस्ट मैच चाहिए, उसमें दिस इज मैंडेटरी, यू हैव टू कीप इट सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, द वे यू लाइक इट टू बी।
तो एनीवेज वन बहुत रेयर केस में हम यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जीरो यूज करेंगे एक्चुअल में. Okay, चलो I think we have taken the queries for VLOOKUP. Now let's quickly demonstrate VLOOKUP again. Demonstrate as in I will be telling you verbally very quickly, and hopefully that will answer all your queries. And yes, then we'll take a practical. 2 minutes में हम practical भी करके दिखा देंगे, so that all queries are addressed. So I am muting all participants for the time being. Okay. So VLOOKUP में, as we discussed, there are 5 components. So first component is function. Second component is what to find. Third component is from where to find. Fourth component is which value to find. And fifth one is exact match or the approximate match. So there are 5 parts of the VLOOKUP, and now these 5 parts is actually binded in form of a formula syntax. तो formula हम कैसे लिखते हैं? Equals VLOOKUP हमने function लिख दिया, and then we'll open the bracket, and bracket open करके we'll give the cell reference. हमको क्या find करना है? So in this case, I am finding data from A2. So my cursor position is in B2, and I am finding data from A2. Okay, and I'll put equals VLOOKUP A2 comma. Then I will give the address of the data where my data is located. So my data is from A7 to B11. So I'll write the formula equals VLOOKUP bracket open A2 comma A7 colon B11, and then I will press F4 key after writing the address A7 colon B11. We'll press the F4 key so that we can make it absolute referencing. We can make the absolute references और dollar signs अपने आप add हो जाएं. So we'll press F4 comma, data is in 2 columns, A and B. So A is the first column and B is the second column. So comma 2 comma the last part of the formula, you will need to type 0 for exact match, and then you need to close the bracket. So this is how the VLOOKUP formula functions. Now just to quickly show you this demonstration with data, so I'll just open my Excel sheet and start the screen share. So my screen share. Annotation content render window. Okay. Task switching meeting controls to move to a Gmail inbox internet meeting controls. Gmail Zoom cloud meetings. Star untitled note Excel session 17 Microsoft Excel demo data. Microsoft Excel. Yes, yes. Okay. So have my demo sheet with me. Selected ATM ID, H lookup grade A5 alert J6 VLOOKUP data selected range lookup 2 F25 employee VLOOKUP data select employee ID A1. Okay, so I have a data with me. So data starting from A1 grade E1 D E6 to E6. So I'm using the same data which we have used last time. So 60 blank A7 blank A8. I have come in A8. So in A8 I will type some value, employee ID I will take. Num lock on blank B8 blank B8. So in A7 25 A8. Sorry, in A8 the employee ID 25 is mentioned. Now I want to do VLOOKUP and find out name of this employee from my data. So blank. Just remember few things. One, before I apply the formula, just remember, try to remember the structure of our Excel sheet. Our data is from A1 to E6, and we are applying formula in B8, and we are trying to find the value which is in A8. Okay, so A8 value has to be found out in data from A1 to E6. So let's just put the formula over here. Characters Equals VLOOKUP dash equals P equals VLOOKUP, then bracket open, left parent then the cell reference. So cell reference what we need to find is A8. A8. Then every function, every parameter in the formula has to be separated by a comma. Then we'll type comma. So A8 comma. Now we need to tell Excel where our data is. So I will type A1 colon E6 E6. and again now I've given the path
and I'll press up F4. F4. And let me see whether dollars have been added or not. So I'll use insert up arrow command to read my formula. Equals lookup left parent A8 comma A1 colon dollar E dollar 6. So it has not added. $6 E dot colon 1 A comma 1 A 1 comma E 6 F4 equals lookup left parent A8 comma A1 comma dollar E dollar 6. Okay, so we have done F4. So automatically dollar A1 E6 dollars have been added by pressing F4. We'll press comma. So in this, the employee ID is in A1 and name is in B column. So A is first, B is second, C is third. So we need to take second column. So I'll type 2 over here. 2 comma. We need to make exact match. So we can write 0 over here. 0 and bracket close. Right parent. And we'll press enter. Enter. Microsoft Office Excel dialog. You've entered too many arguments for this function. To get help with this function, click OK to close this message. Then click the insert function button located to the left of the equal sign in your formula. OK button. To activate, press space bar. So there is some error. So the best advice is before finalizing, before pressing enter, one should read the formula. So I have not read it. So I'll just quickly read it, what error I have made. OK, enter. Equals lookup 0 25 A8 blank B8 25 blank B8. Okay, I'll again enter the formula equals VLOOKUP A 8 comma home equals lookup left parent A8 comma A8 equals lookup left parent A8 comma A1 equals lookup left parent A8 comma A1 colon E6 F4 equals lookup left parent A8 comma dollar A dollar 1 colon dollar E dollar 6 comma 2 comma 0 right parent. So I've rewritten my formula. Alert, Modo C plus has left the meeting. So I'll press insert up arrow. Equals lookup left parent A8 comma dollar A dollar 1 colon dollar E dollar 6 comma 2 comma 0 right parent. So now my formula is correct. I'll press enter. Enter blank B9. Anish has formula. So employee ID of Anish was 25. So his name has come. Okay. So why it was not taking F4? Because I had manually entered the address from where we want to search the value. So F4 works when you select the values by arrow keys. We'll be seeing when we'll be applying formula in a different sheet that will answer your query why F4 was not working. So let's apply this formula in a different sheet now. Lookup 2 blank employee ID A1. So in this sheet I only have the employee ID. So employee ID I have from 25 65 A6 A1 to A6. So we need to find employee details of all the employees. So let's go to B2 quickly. Blank B2. So we'll put the formula over here equals VLOOKUP bracket open left parent A2 comma and then we'll press control page up. You can press control page up, page down depending on where your sheet is located. So I know my sheet location. I'll press control page up quickly. Press arrows to select cells or type an operator. Then arrow equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1. So automatically JAWS announced my address, what address got inserted in my Excel sheet. So I'll press control shift right arrow. Equals lookup left. And control shift down arrow. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1 colon E6. So my entire address got added in that. I'll press F4 key. F4. And now see dollars will also be added. Equals lookup left parent A2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim dollar A dollar 1 colon dollar E dollar 6. So absolute referencing completed now. I'll type in comma 2 comma 0. 2 for getting the name. Comma 2 comma 0. And bracket close. Right parent enter. Blank B3. Anish has formula B2. So now in B2 Anish has come. Let me just copy this formula to copied. Blank B3. B3. Pasted. Dipesh has formula B3. 35 A3. So in A3 the employee ID was 35 and in B3 the name has come as Dipesh.
Dipesh has I'll copy it to copied. Blank B4. I'll copy it to B4. Pasted. Blank. Yajish has formula 45 So A4. in A4, Yogesh we was can there, drag this formula also, right? and in Yajish has formula B4. B4, Yogesh has come. So now let me just quickly read the formula. F2 edit. Equals lookup left parent A4 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim $A $1 colon $E $6 comma 2 comma 0 right parent. Okay. So absolute referencing is working. The cell range is not changing. This is how put the VLOOKUP formula. So I hope most of the queries which you might be having from previous session about VLOOKUP has now been sorted out. With this, we have quickly covered up because last time we have given a lot of time to this. So before we proceed further, I think I'll tell you some more things about VLOOKUP. Then we'll take queries about the complete topic. Okay. So there are a couple of things which you need to keep in mind while applying VLOOKUP, or what are the common errors that might pop up when you are working with VLOOKUP. So one of the error is employee ID 2525 is there at both the places, but still an error will come when you apply the formula number NA. Number NA means that the value which you were trying to find, VLOOKUP was not able to find out that value. So that error might come up, number NA error. So you are very sure that employee ID is very much there, but still it is not coming. So in that case, what you have to do is at both the places, number one place is your source database from where you are doing VLOOKUP. Number two is the new database where you are putting the VLOOKUP formula. So at both the places, you have to use one more function. So say the function is trim, okay, equals trim function or equals clean function. Both the functions do the same things. So one has to use that function. So say in my case, employee ID A1. Employee ID is in A1 in both the places. So what I will do is in B1, I will use the trim function, and let me see. Blank B1. Left parent. So I'll write equals trim bracket open A1. Okay. I'm putting the formula in B1. So in next column, you have to do the trim function. So I'm writing equals trim bracket open A1. A1. Enter. Anish has formula B2. Employee ID has formula. So employee ID has actually in A1 also now employee ID is written, and in B1 also employee ID is written. So now what is the difference? Employee ID has formula B1. What is the difference between A1 and B1? So basically trim, what it does, trim removes the extra characters or spaces that might be there in one of the data, but it is not visible. Okay, there are at times special characters or some spaces which are present in the data which are not visible. So Excel will make it a clean data. Okay, it will clear out those extra spaces or something which are special characters which are not which are actually not required and not visible on the screen. So one has to do the trim function in the subsequent column, or पीछे वाले column में भी कर सकते हो. You can insert the blank column also, and you can apply trim function. So now let me do one thing. I will copy paste this till B6. Copy. I've copied it. 55 has formula B5. Blank pasted. Blank B. 55 has formula B5. So now I have trimmed values from A1 to A6, and trim value is available in from B1 to B6. Now let me go to my source data. Employee ID. In this also I will insert a blank column. C upper ribbon. Home leaving menus. I have inserted a blank column. Employee blank A1. So now A column is blank. So let me trim this also equals. Now my employee ID is in B column. So I'm trimming it equals trim. Bracket open. Left parent. 1. B1. Okay. Enter blank A2. And I will copy paste this from A1 to A6. Copied. Okay? Select A3. Select A6. Pasted. Employee ID has formula Okay. A1. So now I have copy pasted the trim function from A1 to A6. Now we have employee ID in two columns. One is in A column. Employee ID. And the second one is in B column. Now, while applying VLOOKUP function, we have to do the VLOOKUP with the trim values. Okay. So HLOOKUP grade. in new sheet, the data is available in B column, and in the old sheet, the primary data is available in A column. So
now in this case, if you want to search for name using Alert, VLOOKUP, Emmanuel has left the in this case, alert, if we want to search the name by VLOOKUP, now formula will be employee 25 as formula C2, employee blank D1, employee control blank 25 as formula C2, so blank D2, now 25. I am applying my formula in C column, and now my formula will be equals VLOOKUP V2 left 2, comma. and I will go to my sheet. Press arrows to select cells or type an operator. Equals lookup left pair and B2 comma apostrophe V lookup date equals lookup left pair alert Emmanuel has left the alert Emmanuel equals lookup left pair and B2 comma apostrophe V lookup data apostrophe exclaim A1 colon E8. So I have selected my entire data. I'll press F4. F4 comma And instead of now putting 2, because employee ID is in A column also and in B column also, and we have inserted an additional column, so name has gone to C. So instead of putting 2, we will type 3 over here 3 and comma 0 comma right pair enter. Okay, I've taken 4, that's why it has come that way. It has taken the department. So this is how, in case of errors, any errors are coming, you can use trim function to solve the VLOOKUPs. Okay. So this was something additional we wanted to share with you regarding VLOOKUP Rahul sir. queries. Yes. Yeah, in your database, when you added the column, then your source sheet should be from A1 to F7, right? But you selected A1 to E7 only. I have intentionally selected that. Selected that. Yes, you are absolutely right. So data source will change. Okay. So I think a lot of the queries which you have regarding VLOOKUP might have been solved. Rahul, can you repeat this trim function again? That why we have used this trim function? Trim function we are using because at times we may get error, like you are finding account number and you are very sure that account number exists in both the database, but you are still getting any error. Okay, account number is not getting, you are not getting the desired result, matching is not happening. Okay, you are not able to find the desired result. In that case, to remove such special characters, you have to use trim function, so that your data becomes clean. So at both the places where you have account number, you have to trim the account numbers at both the places. Okay, then you do the VLOOKUP. Your both the sheets. In both the sheets. Okay, so then after trimming, like after using the trim function, then we have to apply VLOOKUP again. Yes. So this is all about it. Thank you. Any other query? RTG, whether your query is solved? Excuse me, sir. Actually, I personally tried doing this जो VLOOKUP दूसरी sheet में करना था. So I did the same process, but when I pressed control page up, it did not speak कि sheet name क्या है, and when I press control shift right arrow down arrow, then also it does not spoke, and I checked insert up arrow से, so the range didn't get inserted. Command आपने equals VLOOKUP और आपका cell reference मान लेते हैं इसमें A2, कॉमा लगाया था A2 के बाद? लगाया था. उसके बाद भी नहीं आ रहा. ओके. नहीं वो ऑफलाइन नहीं आ रहा. सना विल टेक दिस ऑफलाइन. मतलब सिस्टम स्पेसिफिक इशू है. इसमें जो ट्रिम में है, एक फॉर शीट 1 और शीट 2 दोनों में पहले ट्रिम करना पड़ेगा, फिर अप्लाई होगा. दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा ना. You have to... नहीं तो जैसे कि अगर शीट 1 में ए में एम्प्लॉय आईडी और शीट 2 में ए में हमने एम्प्लॉय आईडी लिख लिया, लेकिन हम शीट 2 में B1 में उसको ट्रिम कर दे, तो ऐसे हो जाएगा ना कि यहाँ B1 में है, उधर A, तो यहाँ का A1 पहले हम डिलीट करेंगे तभी यहाँ B1 में रहेगा, और शीट 1 में A1 में जो लिखा है वो रहेगा डेटा सोर्स. वही भी कर सकते हो आप. मतलब यहाँ पे मैंने B1 में किया था, आप चाहते तो एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करके यहाँ पे भी A1 में कर सकते थे. इट इज योर चॉइस. नहीं तो जब हमने यही तो फिर ट्रिम का लगाया अप्लाई में, शीट 1 में तो अप्लाई नहीं किया, तो मैं वही पूछूं कि एक ही जगह हमें ट्रिम लिखेंगे ना, इक्वल्स ट्रिम. इक्वल स्ट्रीम फॉर्मूला हम दोनों शीट्स में बार बार अलग अलग लगाएंगे. मतलब नहीं. Okay, I'll explain this. Okay, say in sheet 1 you have a data from A1 to B20. Alert, Vasu has left the meeting. You have data from A1 to B20, and in sheet 2 you have data A1 to A20. In both the sheets, number is common. Say serial number is common. Okay. So now you are putting VLOOKUP, but desired result is not coming. Now you want to trim the values. So what you will do is you'll go to sheet 1 where data is from A1 to B20. You'll insert a blank column before A1 and you'll put a formula equals trim A1, and you'll copy that formula equals trim A2. You'll copy that formula
from A1 to A20. Okay, clear? Okay. I think no, I have mistake. So equals trim B1 you will type. Okay, because your B1 data. में हाँ अच्छा ओके B1 में चला गया हाँ डेटा तो बी कॉलम में चला गया ना, कॉलम चेंज हो गया ना आपका. So you will type in A1, you will type equals trim B1 and you will drag this data from A1 to A20. ठीक है, ये फॉर्मूला आप कॉपी पेस्ट कर दोगे. हाँ. तो जैसे ही A20 में जाएगा तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इक्वल्स ट्रिम B20. यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ यू विल कम टू योर सेकंड शीट वेयर ओनली एम्प्लॉय आईडी इज देयर. वहां पे आप अगेन ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करोगे और ये जो स्टेप वहां पे किया वो स्टेप रिपीट करोगे और उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दोगे सी वाले कॉलम में. ठीक है, सी वाले कॉलम में यू विल यूज द VLOOKUP फॉर्मूला एंड नाउ यू हैव 3 कॉलम्स इन शीट 1 A B C. So employee ID or the serial number is in 2 columns, A column also or B column also. So now you want to match the name. So you will use the formula equals VLOOKUP and in the end instead of putting 2 you will put 3 because you will be selecting the range from A1 to C20. Okay, sheet 1 A1 C20. So this way you will be able to achieve your desired result. And in this process we have done VLOOKUP at both the places, in sheet 1 also and in sheet 2 also. So the trim, can we use trim के same sheet में apply करना? We don't want to apply it in another sheet. You can apply it in different sheet also. मतलब सेल रेफरेंस नहीं जैसे कि ट्रिम जैसे शीट 1 में ट्रिम लिखा, शीट 1 में किसी और सेल में अप्लाई करना है, 2 में करना ही नहीं, तो हो सकता है ट्रिम. शीट 1 में डेटा है और आपको शीट 1 में ट्रिम नहीं करना, ऐसा आप कह रहे हो? शीट 1 में ट्रिम है, ट्रिम भी कर दिया शीट 1 में, लेकिन VLOOKUP शीट 1 में अप्लाई करना है इंस्टेड ऑफ शीट 2. हाँ वो भी कर सकते हो ना, क्या इशू है, वो भी हो जाएगा. उसका भी डिफरेंट नहीं, तब आपको ट्रिम 1 एक ही बार यूज करना पड़ेगा ना. नहीं, ट्रिम तो एक ही बार यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अच्छा तो उसी में आप लिख सकते हो, उसी तरह से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सेम शीट में जब करना है अप्लाई. तो वो तो सेल रेंज तो तब आपकी शीट के अलावा मतलब खाली सेल रेंज आ जाएगी, मतलब तब शीट नहीं पिक कर रहे हो ना आप. हाँ ठीक है. तो सर सेम शीट में फिर ट्रिम तो एक ही बार करेंगे एंड सेम शीट में हम VLOOKUP का फॉर्मूला लगा सकते हैं. हाँ, सेकंड शीट में क्या कहते हैं, अगेन वही स्टेप्स जो है रिपीट होंगे दोनों को इक्वल करने के लिए. नहीं, अभी भी कंफ्यूजन अराउंड ट्रिम. सुनो ना, यस, बेसिकली आरती एंड सना, बोथ ऑफ यू, मैं आपको बोलूंगा आपकी जो क्वेरीज है ना वो प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल क्वेरीज हैं. सो वंस यू स्टार्ट डूइंग इट योर क्वेरीज विल बी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व्ड. आप करके देखो साइमल्टेनियसली, यू कैन प्रैक्टिस इट बाय द टाइम वी आर आंसरिंग अदर क्वेरीज. आप करके देख लो, आपके अपने आप यू विल गेट द आंसर्स वंस यू स्टार्ट डूइंग इट. Okay, because I hope you have understood the concept of trim. yes. बस ठीक है, जब करना शुरू करोगे you will get your answers automatically. And sir वो जो नेक्स्ट शीट में लगाने वाला है उसका क्या सोल्यूशन है? जैसे मेरे साथ मतलब एरर आ रहा है, एरर क्या, वो जॉज स्पीक नहीं कर रहा प्रॉपर्ली. हाँ वो हम ऑफलाइन कनेक्ट करेंगे ना, आपका सिस्टम इशू है वो. आप इस सेशन के बाद कनेक्ट हो जाना हमसे फोन पे बात कर लेंगे. We'll resolve this. हेलो, ग्रेट, यस, नेक्स्ट. हाँ राहुल, मेरी एक क्वेरी थी. बोलो. जैसे अगर हमने ट्रिम कर दिया तो अगर B1 में डेटा जैसे था और A1 में चला गया ट्रिम करके, तो जैसे मेरे को VLOOKUP लगाना है, तो जैसे व्हाट टू फाइंड में मैं B2 लिखूंगा कि जो मैंने ट्रिम डेटा किया है A2 लिखूंगा? A2 लिखोगे. अच्छा, ठीक है. हाँ जी. मतलब पहले हम A2 से ही शुरू करेंगे, मतलब जहाँ से हमारी सेल हमारा डेटा रेंज शुरू हो रहा है हम वहीं से शुरू करेंगे. तो डेटा रेंज हमारा A से शुरू हो रहा है तो हम A से स्टार्ट करेंगे. A1 से पहले सेल ऐड कैसे करते हैं? ओके, नेक्स्ट. हेलो, यस सर आपने 3,0 राइट 4 participants raised hand. Alert, 4 participants raised hand. उसमें नेम भी लगा सेल्स के साथ है. सॉरी कम अगेन, फिर से बोलो. आपने लाइक 3, 3 मतलब कॉलम नंबर 3, 0 फिर राइट बैंड, तो उसमें नेम की जगह सेल डायरेक्टली आ गया था, तो वो कैसे होगा सर? वो मेरे फॉर्मूला में एरर था, मैंने 3 नहीं किया था, मैंने 4 कर दिया था गलती से. ओके, तो सर जैसे हम लोग 1 शीट से दूसरे शीट पे सब करते हैं VLOOKUP, तो एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. उसके लिए जैसे आपने कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन डिफरेंट शीट्स में नेविगेट करने के लिए यूज किया, उसमें आप ऑल टाइप यूज कर लोगे. ओके, समझो. तो डायरेक्टली ऑल टाइप करेंगे तो अपने आप. आई थिंक लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग फॉर दिस कि डिफरेंट वर्कबुक्स में कैसे करना है. मैं क्विक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाई देता हूँ. ओके, JAWS is audible to everyone? Yes sir. 25 as formula A2. Employee shift page down. Copy alert 3 participants. Control N alert Zoarcare wallet 20. Employee ID A1.
Microsoft Excel book 1 sheet 1. ठीक है, अभी book I have created a new book with employee IDs and my data is in the earlier sheet also. So सेल के जो रेफरेंसेस हैं, जो एम्प्लॉय आईडी है, वो A1 से A6 में ही रहे हैं. So I will come to B2. 20 blank यहाँ पे मैं B2 VLOOKUP लिखना शुरू कर रहा हूँ. Equals VLOOKUP. P left parent ओपन A2 कॉमा A2 comma नाउ हमारा मेन रोल आता है कि डिफरेंट शीट, हमें दूसरी शीट में जाना है. तो दूसरी शीट में जाने का जो कमांड है वो है ऑल टैब और कंट्रोल F6 भी है. सो आई विल ट्राई विद कंट्रोल F6. आई हैव नॉट ट्राइड इट सो फार, आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. कंट्रोल F6 प्रेस करूंगा. control F6 blank blank So it is not working. blank I will try it all tab only. Equals VLOOKUP left parent A2 comma A2 comma and I'll now press all tab. book 1 to meeting controls Gmail inbox meeting book 1 Zoom demo data. Rahul, control tab. Okay. So I press all tab and I've come to demo data. Okay. अब मैं insert app arrow से पढ़ लेता हूँ क्या सुनाई दे रहा है. Blank. Edited cell B2 in book 1 sheet 1. Blank. Okay. Somehow it is not reading. So let me just try to complete my formula. Equals lookup left parent A2 comma left bracket demo data dot XLSX right bracket lookup 2 exclaim $A $1. Okay. Okay. It started reading. So मैंने क्या किया? Equals VLOOKUP A2 comma all tab करके शीट का नाम जैसे उसने अनाउंस किया, मैंने all tab छोड़ दिया. And then I press control home. Control home क्यों प्रेस किया? To come to the first cell in the sheet from where I'm importing the values. So जैसे ही मैंने control interrupt you. Excuse me, हाँ, sorry for interrupt you. Your cylinder voice is not audible. my voice is not. But John is not audible or my voice? Alert, Krishna Sarawat has left the meeting. No, it is audible. Alert, Krishna Sarawat has joined the... Now I can hear you, sir. Okay. Okay. Great. So Control home. okay. So what we have done is equals VLOOKUP A2 comma. I think some people are waiting in the waiting room. योगेश भैया एक बार चेक कर लेना. Okay. So equals VLOOKUP A2 comma ऑल टाइप प्रेस किया, अपनी उस शीट पे आ गए जहां से हमको डेटा इंपोर्ट करना है. तो जॉर्ज ने अनाउंस किया डेमो डेटा. सो आई लिफ्टेड माय ऑल टैब कीज. नाउ कंट्रोल होम प्रेस किया टू कम टू दी टॉप ऑफ दैट. उस शीट में टॉप में डेटा के बिगिनिंग में आने के लिए कंट्रोल होम प्रेस किया. तो जैसे ही कंट्रोल होम प्रेस किया, जॉर्ज ने अनाउंस कर दिया इक्वल्स VLOOKUP डेटा शीट का नाम कॉमा जो सेल का रेफरेंस था वो पूरा अनाउंस कर दिया. नाउ वी कैन यूज आवर स्टैंडर्ड सिलेक्शन कमांड्स. कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यूज करेंगे. Equals lookup left parent A2 comma left bracket demo data dot XLSX right bracket lookup 2 exclaim $A $1 colon $C $2. मैं मतलब गलत शीट में था इसलिए ठीक से सिलेक्ट नहीं हुआ. मैं Equals lookup left parent A2 comma left bracket demo data dot XLSX right bracket lookup 2 exclaim $A $1. मैं अभी क्या कर रहा हूँ? कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन यूज कर रहा हूँ. कंट्रोल पेज अप पेज डाउन इज द कमांड टू नेविगेट बिटवीन शीट्स. तो जो नेविगेशन हो रहा है वो फॉर्मूले में ही हो रहा है नेविगेशन. एंड शीट्स आर चेंजिंग ऑफ द सोर्स डेटा शीट. ओके, जहां से हम डेटा इंपोर्ट करेंगे उस शीट की जो रेफरेंसिंग है वो चेंज हो रही है. एंड इट इज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द फॉर्मूला. ओके, सो आई विल सिलेक्ट माय डिजायर्ड शीट. Equals lookup left parent A2 comma left bracket demo data dot XLSX right bracket lookup 2 exclaim $A $1. ओके, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया. एंड Alert, Krishna Sarawat. I'll press F4 for absolute referencing. F4 And I'll press comma comma 2 3 जो भी आपकी वैल्यू की पोजीशन है वो ले लो. 2 comma 0 0 bracket close. right parent enter blank B3 तो फॉर्मूला अपना let's read our formula. number n/F2 edit top equals lookup left parent A2 comma left bracket demo data dot XLSX right bracket lookup 2 exclaim $A $1 colon C $7 comma 2 comma 0 right parent. So this is how formula was written. So in this actually the correct sheet name I have not taken. I was not able to take somehow. That's why number NA result आया है. So let me just quickly fix this also. मैं एक बार जल्दी से फॉर्मूला टाइप करके आपको करेक्ट आंसर भी लाके दिखा देता हूँ. Escape demo data to move to an item 45 has formula A4. Employee ID has formula A1. So I'll move to sheet quickly. Move to worksheet. Lookup 2 of 5. H look V lookup data 1 enter. Employee ID has form demo date book 1. New book में आ गया. यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं. Number n/A has formula. We look up A2 comma
Alt tab. Book 1, demo data. जैसे डेमो डेटा बोला हाथ हटा लिया कीबोर्ड से. Employee ID A1. 20. Employee demo book 1. There is some problem. Blank. Lookup equals a 2. Because we look up A2 comma. Book demo data equals lookup left parent A2 comma apostrophe left bracket demo data dot xlsx right bracket v lookup data apostrophe exclaim $A$1 equals lookup left parent A2 comma apostrophe left bracket demo data dot xlsx right bracket v lookup data apostrophe exclaim $A$1 colon $E$8 blank D3 Anish has formula Okay. B2. So finally it has happened. Equals Alt tab ही यूज किया और Alt tab यूज करके जैसे पहले आपको प्रोसेस बताया था कि आपने उसमें कंट्रोल पेज अप जब आप शीट्स में अप्लाई कर रहे हैं at that time you are using control page up control page down, but in this case instead of using Alt tab you are using control page up page down, you are using Alt tab. Now problem ये आ सकती है कि कई बार Alt tab you have to be very careful, like once you press Alt tab you might hear your existing sheet name, again you might have to press Alt tab twice. Okay, 2 times you need to press Alt tab. You have to be very careful while listening what JAWS is announcing, and then you can use the same method, up arrow, down arrow and selection command to import data from a different sheet also. Okay, so this is how you can import data from multiple sheets. So formula Yeah, I just wanted to confirm one thing. Instead of using Alt tab, can we also use Control tab? Control tab not tried. Yogesh Bhaiya. I have also not tried, but there is a command to move between different Excel workbooks. So we can try, like because Alt tab we can move between open programs, but to move between open different Excel workbooks we can left parent A2 comma apostrophe left bracket demo data dot xlsx right bracket v. Oh, it's working. Okay, so rather than using Alt tab, you can use Control tab. That's better approach. Sure, thank you. Okay, any other query regarding VLOOKUP? हेलो सर. Yes. सॉरी टू ट्रबल यू अगेन सर. जैसे हम लोग ने एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट किया, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इज देयर एनी वे टू फाइंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आल्सो? लाइक इफ आई सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम देन कैन आई फाइंड एम्प्लॉय आईडी आल्सो? VLOOKUP का ना यही प्रॉब्लम है कि राइट ही सर्च करता है. सर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इटसेल्फ. ओके, सो राइट टू लेफ्ट यू कैन नॉट, मतलब उसके लिए द फार्मूला इज डिफरेंट, बट VLOOKUP कैन नॉट डू दैट टू आंसर योर क्वेरी. Okay, so I think now can we proceed to HLOOKUP? No more queries for VLOOKUP. And the best thing about Excel is one has to start practicing to make the things permanent and memorable. More and more you use Excel, you'll be able to explore and improvise on formulas. So better solution is to use it, and most of the queries get solved while using it also. Okay, so you need to understand the concept and the different parts of the formula, so that we have covered. Okay, so now let's move to HLOOKUP. We can ask if it is required, then we can go ahead, otherwise we can stop. Anybody still having any query regarding VLOOKUP, so we can answer that. And if HLOOKUP is really required, or we can skip it? Actually HLOOKUP होता क्या है? VLOOKUP is vertically looking up and HLOOKUP is horizontal lookup. I think it's very helpful if we cover it in short. One by one, we are not getting. Sorry? We already know the function of VLOOKUP. If we just cover it in short, it will be helpful. Okay, Rahul. Yeah. So we'll quickly cover it up. So HLOOKUP, as VLOOKUP you understood it is vertically looking up. HLOOKUP is horizontally looking up. So now I'll explain you the my sheet structure. Demo data.xlsx. Lookup 2. Employee ID has formula A1. HLOOKUP grade A. Employee ID name A2. Employee ID A1. So now my data is horizontally located. The same data is there. Okay. Demo data to move book 1. Demo data. Meeting control. Meeting controls. My JAWS audible. So I am in the demo data sheet, and my data, there is some distraction from somebody's side. Yogesh Bhaiya. Bolo. I think distraction. Just see if we can mute all. Book 1. Sheet 1. Just. Please, participants, you mute yourself. Somebody's microphone is unmuted. Hello. Hello, Rahul. Yes. Am I audible? Yes. PC audio now on. Great. Yeah. Task switching. Book 1 to move demo data. Okay. So my JAWS is also audible. Microsoft Excel. Yes. Okay. So now Lookup this 2. data, instead of being arranged vertically, this data is arranged horizontally. So let us see HLOOKUP, employee data, ID. how it looks like. Name A. Employee ID A1. Name A2. Department A3. Appraisal score A4. Grade A5. So earlier the headings were in columns. Now headings are in rows. Okay. And VLOOKUP search for data left to right. HLOOKUP search for data from top to bottom. Okay.
So now let us see what do we have in B column. Employee ID A1 25 B1. So in B column, Employee we 25 have got B1. employee IDs. Anish B2 25. Employee ID A1. Okay, in Name A2. Anish B2. second row we have, okay, let's understand it from the point of view of rows. Employee So ID in A1. first row we have the employee IDs of all the employees. Name A2. In second row, name. Department A3. In third row, department. Appraisal score And A4. appraisal score. Grade And A5. last one is grade. Blank So A6. now we Blank want A6. to apply HLOOKUP formula for employee ID 25. Okay. So we'll be applying it in the same sheets and everything remains the same. What we have told for VLOOKUP, everything remains the same, but concept is slightly different. So let's just understand the concept. Apply the formula equals HLOOKUP. Characters equals H F O O K U P. Bracket open. Left We parent. want to find employee ID 25 name. Sir, Two, your voice is five. very low. Okay, no problem. Now, is it clear? Yes, yes. Okay. So we are trying to find out the name of the employee ID 25. Blank A7. So Blank in A7. A7 will type 25. Num lock off. Num lock on. 2. Blank And B7. in B7 we'll try to find out the name of the employee. So we'll write equals HLOOKUP, Equals lookup. bracket open, Left parent. A7, A7. Comma. comma. So select our range. Home equals lookup left parent A7 comma A7. Equals lookup left parent A7 comma A1 colon F7. So I've selected my range and F4 comma. now the name is in the second row. Okay. Name is in second row. So I'll write 2 over here. 2 comma 0 right parent. Enter. OK button. There is some Escape. error. Let me just do it once again quickly. Blank B7. P left parent A7 comma dollar A dollar 1 colon dollar I 4 dollar 6 comma 2 comma 0 right parent. Enter. Blank B8 Anish has formula B7. Okay. So Anish has come. So basically in VLOOKUP you are finding it in columns. Okay. So the numbering was Alert. Kola Prakash has entered the waiting room. okay. So the numbering of basically the last value where you were entering 2, 3 was on the basis of column. But in this case, it is the data is arranged in rows. Okay. Earlier the data was in columns, and in this case the data is arranged in rows. So we want Employee. to find the name of the employee ID. So name is in second row. Name A2. So we have typed. Alert. Kola So we got the name. Now appraisal score. Alert. Kola Prakash. we want to find out the appraisal score of the Alert, employee Christmas. ID of 25. End. Grade A5. Blank. Alert. 25 A7. Appraisal score A4. So appraisal score is in the fourth row. So instead of putting the value 2, we'll change it to Grade A5. 4. Anish has So I'm just reading the formula. See how the formula is F2. now. Edit. Equals H O U P. Equals HLOOKUP. Papa. Bracket open. Left parent A7 A7. comma dollar A1 colon I 6 comma 2 comma So instead of 2, I will change it to now 4. 2 4. And I'll press enter. Enter. Blank B8 25 90. So 90 has formula B7. 90 is the appraisal score of employee ID 25. Name is Anish. His score is 90. So the basic only one difference is there in VLOOKUP and HLOOKUP, that VLOOKUP looks vertically and HLOOKUP search for values horizontally. VLOOKUP works in columns, HLOOKUP works in rows. So this is the only difference. Rest, everything remains the same. Applying in different sheets, applying in different workbooks, everything remains the same. So this is how the HLOOKUP. So I think if any doubts we can take up, otherwise not much to share up. राहुल VLOOKUP और HLOOKUP में VLOOKUP में जो हम वो लिखते थे 0 से पहले जो नंबर डालते थे 3 या 2 वो हमें ये देखना होता था कि हमारे मतलब कितने कॉलम से, सपोज A कॉलम से हमारा C कॉलम तक डेटा है तो हम 3 डालेंगे, राइट? बट HLOOKUP में हमें रोज नहीं उमंग, कॉलम अगर A से C तक है तो 3 नहीं डालेंगे. अगर हमें कॉलम बी में कुछ वाली वैल्यू सर्च करनी है तो 2 डालेंगे, सी वाली करनी है तो 3 डालेंगे. अच्छा, तो वो कॉन्सेप्ट ही मतलब सेम है VLOOKUP और हाँ वो सेम है. वो यहाँ रोज को काउंट करेगा 1 2 3, मतलब A1 B1 जो होगा वो रो 1 हो जाएगा, A2 2 हो जाएगा, A3 3 हो जाएगा ऐसे. ओके मतलब वो कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा. वो तो सेम है. अच्छा ठीक है. हेलो सर, हरप्रीत इज हियर सर. थैंक यू. हाँ जी हेलो. हाँ जी हाँ सर, डिफरेंट शीट्स में भी यही सेम फॉर्मूला होगा HLOOKUP के साथ में. हाँ जी. सर एक सवाल है सुधीर का. Alert. New participants raised hand. VLOOKUP में मुझे डाउट आया था.
जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, स्क्रीन शेयर डिसेबल कर देता हूँ, देन वील टेक योर क्वेरीज। स्क्रीन शेयर ऑन रहेगा तो आपका भी meeting control, book 1, meeting controls, mute, audio, start, video settings, start my video button, open pause button, new share, pause share, edit, pause. Okay, yes, now you can go ahead. Yes, तो सर मेरा सवाल ये था क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो गया था मुझे, जो अपने ये तो डेटा भी बहुत छोटा है, सिर्फ 6-7 रोज का ही डेटा है। अगर मेरे पास थाउजेंड्स में डेटा है तो मुझे हमेशा ही उसके बॉटम में जाना चाहिए, या फिर मुझे डेटा आई थिंक मेरा A1 से लेके H तक है, A से लेके H तक है, से 8 कॉलम है मेरे, जितनी बड़ा डेटा है मेरा, और मेरे जो रोज है वो मेरे अकॉर्डिंग 15-20 हजार रोज है। तो मैं अगर उसमें बॉटम एकदम जाके रिजल्ट निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं उसी 9th-10th कॉलम में जाके रिजल्ट निकालना चाहता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे बॉटम में लिखा, I got your question, निकाल सकते हो। 25 and then in we look up that A7, right? So वो उस टाइम पे वही रेफरेंस देना चाहिए जिसका नंबर उसमें है, उसी नंबर का निकालने के लिए वो रेफरेंस दिया गया है, या फिर उसके लिए कोई अलग से इंटेंशन है देने के लिए? So I'll take your example से आपका डेटा है A1 से लेके H80,000 तक, H20,000 तक, ठीक है। अब आप फाइंड आउट करना चाहते हो I1 में कोई वैल्यू, या J1 में फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। I1 में आपने लिख दिया एम्प्लॉय ID 25, और आप जो A1 से लेके H20,000 तक का जो डेटा है उसमें 25 नंबर जो एम्प्लॉय ID है उसका आप रिजल्ट चाहते हो J1 में, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सबसे बॉटम में जाके आप फॉर्मूला लिखो, यू कैन राइट एनीवेयर योर फॉर्मूला एज पर योर विश। जो भी वैल्यूज उसमें लिखे होगी, जो भी है, मतलब लाइक आई में मैंने वो वैल्यू लिखी 25, या फिर जो भी एक 250 लाइक 250 वैल्यूज लिखी, वो जब हम लोग वी लुकअप फिर कॉमा लिखने के बाद जो भी अपना आई मतलब इट मींस I1 हो जाएगा, yes, I2 I1 जो भी हो जाएगा, I2 I1 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देके तो मुझे उसमें से क्या ढूंढना है, जो एक कॉलम है जिसके लिए हमने देखा कि उसका नाम ढूंढना है जो बी में है, तो फिर वो B2 से लेके कॉलन B20,000 उसको सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा देके फिर 20। नहीं वो तो आपका A1 से लेके H20,000 तक ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, वो पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है उसके लिए। सिंपली वही कॉलम में नहीं सिलेक्ट कर सकते, नहीं मतलब A अभी उधर होगा तो A2 से लेके कॉलम A2 कॉलन H20,000 ऐसा पूरे दिया, और उसके लिए मैंने और दबा के एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कर दिया उसको। फिर लास्ट में जो वैल्यूज है नंबर 2 लाइक जिसमें 2 कॉलम है 2,0 फिर एंटर, तो वैल्यू आ जाएगी सही से। आपका जो एम्प्लॉय आईडी है वो कौन से कॉलम में है? जो A1 में ही पकड़ा। हाँ बिल्कुल आ जाएगी, आपने बिल्कुल सही बताया, एब्सोल्युटली राइट। ओके ठीक है। अगर ड्रैग करना है सर तो इसमें ड्रैग का कोई फंक्शन यूज नहीं होगा, क्योंकि ड्रैग नहीं, कॉपी पेस्ट करते हैं, साइटेड यूजर्स ड्रैग करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। सर हमें ड्रैग के लिए तो कर सकते हैं हम लोग ये ड्रैग, लेकिन इसमें तो सिर्फ 25 नंबर हमने पर्टिकुलर एक ही आईडी के लिए ढूंढा, लेकिन ऐसा ये भी लुकअप कॉलम है ना, नॉट ओनली सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के लिए, अगर मल्टीपल क्राइटेरियाज में इसको यूज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ वो हमने लास्ट सेशन में बताया था और अभी भी डेमोन्स्ट्रेशन में बताया कि मान लो आपके पास A1 से लेके A20,000 तक एम्प्लॉय आईडी एक शीट में है, और दूसरी शीट में आपके पास उन 20,000 में से सिर्फ 200 एम्प्लॉय आईडीज हैं। ओके, आउट ऑफ 20,000 यू हैव ओनली 200 IDs in a different sheet. Okay, so you can say sheet 1 में आपके पास A1 से H 20,000 तक है, और sheet 2 में A1 से लेके A200 तक है। ठीक है, sheet 2 में A1 से A200 तक है, तो आप B1 से B200 तक में आप फॉर्मूला लगा सकते हो, और जो फॉर्मूला आपने अभी हमें बताया है वही फॉर्मूला लगा सकते हो, आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, 200 एम्प्लॉइज का आपका डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट। हेलो राहुल, मैं एक चीज पूछना चाहता था। जैसे ये जॉर्ज डॉलर बोल रहा था तो इतना समझ नहीं आया। जैसे हम वी लुकअप सेम शीट पे लगा रहे हैं, तो जैसे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन A2 मतलब व्हाट टू फाइंड में, और उसमें A1 E6 तो डॉलर लगाएंगे उस A1 E6। अच्छा, E6 फिर F4 है ना? हाँ, डॉलर लगाने के लिए, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करने के लिए। बस हाँ, थैंक यू, यही पूछना था। ठीक, चलो। ओके, एनी अदर क्वेरी? आई थिंक कपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर रेजिंग देयर हैंड्स। आपके अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, लेट मी जस्ट सी। यस, क्वेरी पूछिए किसको। हेलो। यस, हाँ सर, जैसा ये जो हेडिंग है वो रो में अरेंज होगा, वो हेडिंग कॉलम्स में अरेंज है, तो ये एच लुकअप काम करेगा क्या? नहीं, एच लुकअप इज ओनली फॉर रोज। ओके, सो अगर इसमें कॉलम में होगा तो वी लुकअप यूज करना है। करेक्ट। ओके, थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। सर मेरा एक और क्वेरी है
हाँ यस, ये जो एक्चुअली इस HLOOKUP या VLOOKUP से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक्सेल में जैसे फॉर्मूला टैब होता है तो वो किस तरीके से यूज किया जाता है, वो एक मेन डाउट था। ओके, फॉर्मूला टैब में बहुत सारे फंक्शंस हैं, इंसर्ट फंक्शन करके एक ऑप्शन रहता है उसमें, तो जिन फॉर्मूलाज की आपको जानकारी नहीं है वो फंक्शंस आप वहां से इंसर्ट कर सकते हो। आई थिंक आप ऑफलाइन कनेक्ट हो ना, विल बी एबल टू हेल्प यू बिकॉज दैट इज इटसेल्फ अ वेरी वास्ट टॉपिक। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन राहुल, हाँ, जो आपने VLOOKUP में जैसे A8 में आपने 25 लिखा था, है ना, तो वो आपने जो A8 में 25 लिखा था वो एग्जाम्पल देने के लिए लिखा था, या फिर जब हम लगाएंगे तो हमें वो चीज पहले नीचे किसी फॉर्मूला में मतलब किसी कॉलम में लिखनी पड़ेगी? एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल के लिए था ना, वो वाला हम ऊपर वो वाली सेल रेफरेंस ले सकते थे मतलब। हाँ, वो एग्जाम्पल के लिए था बस। ठीक है सर, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, ये तभी जो 3 सेशन हो गए हमारे, तो इन तीनों सेशन के हमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स या फिर MP3 और वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो मिल सकती है आफ्टर दिस सेशन। टीम एट नैप दिल्ली इज वर्किंग ऑन दैट एंड होपफुली मतलब काफी और सेशंस के रिकॉर्डिंग्स भी अनाउंस हो चुके हैं, तो होपफुली यू विल गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीस सेशंस डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग्स। मतलब बहुत सारे ना डिस्ट्रैक्शंस है बीच में, so let us see whether we'll be able to provide or not, but yes, it's been worked upon. There is no problem with MP3 if there is a recording, a screen recording is in video MP4 format. It will help that we can mute and just see that what action you are taking in that video. So that can I answer him? Try. We'll yeah. So we'll try to get. Okay. Any other query? Okay. Thank you everyone. So we are just closing for the day. And in case of any doubts, you have our email IDs. You can write to us, and you can get in touch with NAB helpline also. Numbers are given in the announcement, so most of your queries can be answered from there. And if you want to get in touch with the resource persons, you have got our email ID, so you can get in touch anytime. Okay, thank you everyone. Yeah.